या सो हम लोग करीबन 10-15 मिनट साथ रहेंगे एक दूसरे के। सो मे आई नो अबाउट योर सेल्फ, आप लोग कहाँ कहाँ से हैं? सर दिल्ली। गौरव गुप्ता फ्रॉम दिल्ली, गुड। जी सर। Sir, I am from Kolkata. अमित जायसवाल फ्रॉम कोलकाता, गुड। From Kerala, Trivandrum. आशिक सिद्दीकी फ्रॉम केरला, त्रिवेंद्रम। पार्थ, Sir, West Bengal. दिल्ली, गुड। Patrick from Delhi, sir. ओके, गुड। I am from Noida, sir. Sir, Anjali from Delhi. अंजलि फ्रॉम दिल्ली। ये पार्थ कहाँ से हैं? पार्थ ने हैंड रेज किया है। सर आप कहाँ से हो? Sir, by mistake. आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, Sir, I am Parth from Delhi, New Delhi. गुड। ओके सर। एनीवन प्लीज? ये अथर प्रताप हो गए ना? मेवालाल प्रसाद कहाँ से हैं आप? यू आर I फ्रॉम am from नोएडा, Noida, sir. गुड। Sir, Noida, sir. अथर्व, yes, sir, I'm from Varanasi. वाराणसी, गुड। Sir, I'm Sara from Belgaum. ओके, और कोई बच्चे? Sir, Gitansh from Delhi. Maharashtra. Sir, I am Samir from Delhi. समीर, तो मोस्ट ऑफ दिल्ली से हैं क्या? ये गीतनेश ठक्कर कहाँ से हैं? Sir, Delhi, Delhi. दिल्ली, गुड। सो अभी तक आपने मैनेजमेंट नहीं पढ़ा ना? आप लोग को कितनी काउंसलिंग हो चुकी हैं? Sir, 2 हो चुकी है. दो, सर दो हो गई, ओके, इंग्लिश की और एनवायरमेंटल स्टडीज की हो गई है। ओके। एनवायरमेंट में डॉक्टर नूरुल हसन रहे होंगे ना? एनवायरमेंट में कौन थे? नाम याद नहीं है हाँ सर आपको? वही थे। हाँ सर डॉक्टर नूरुल हसन ही थे। हाँ, गुड गुड गुड। क्योंकि एनवायरमेंट मोस्टली वही पढ़ाते हैं वहाँ पर। तो हाउ इज योर एक्सपीरियंस? सर इट वाज गुड। ओके, सो आर यू अवेयर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंसलिंग? काउंसलिंग मीन्स काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप लोग मटेरियल पढ़ के आए हैं अपना? आप लोगों को स्टडी मटेरियल मिला? सर सभी स्टडी मटेरियल अभी तक नहीं मिला। स्टडी मटेरियल अभी नहीं मिला? आपका ECO7 जो है और BRL 113 का स्टडी मटेरियल अभी तक नहीं मिला। ओके ओके, बाकी मिल गया है। गुड। नहीं, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था क्योंकि काउंसलिंग के लिए थोड़ा सा आपको पहले पढ़ना होगा। दैट योर काउंसलर विल रिजॉल्व योर प्रॉब्लम एंड क्वेरी व्हाटएवर इट इज, है ना? सर BRL 113 का कुछ बुक्स भी नहीं मिल रहा है बाहर, मतलब, और ये उसके बारे में कुछ बता देते अगर। चलिए, वो कोई बात नहीं, जब भी सेशन आएगा उसके डे टू डे बेसिस पे जो जो कंटेंट होगा ओके सर, थैंक यू। डिस्कस करेंगे। ओके सर, ओके सर, ओके, है ना? ओके। तो आज थोड़ा सा हम BCOC जो कौन सा है 131 है आज टुडे? 132 सेशन है? 132 है Sir, 132. 132 है। लेट मी सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। आप लोगों के पास अगर स्टडी मटेरियल ना भी हो ना, तो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम ज्ञान कोर्स, दैट इज ओपन रिसोर्स अवेलेबल ऑन इग्नू वेबसाइट। तो आप लोग उसको एक बार आप उसको देख सकते हैं उसको। सर BRL 113 का इग्नू ज्ञान कोर्स में भी नहीं है, वो नहीं मिल रहा है। मेरे ख्याल से तो होना चाहिए, लेकिन चलिए देखते हैं जैसा भी होगा। सर हमें ना अभी सेमेस्टर 2 की खाली सर ईगान कोश में जो भी है वो रिटेल है, BBA रिटेलर की है, मतलब जनरल BBA का नोट्स बहुत कम है। नहीं, हमको अपने कोर्स कंटेंट से देखना है। एक्चुअली इन इग्नू कोई भी कोर्स अगर ऐसा है कि BBA रिटेलिंग में है, वो BBA में भी हो सकता है, वो अगर कोर्स कोड सेम है।
सपोज यही आपका जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं BCOC 132, ये आपका BBA रिटेलिंग में भी है और BBA में भी है, दोनों में है। तो इसलिए नॉट टू बी वरी, आपको सिर्फ कोर्स कंटेंट का कोड डालना है एंड जो भी मटेरियल मिलेगा उसको आपको स्टडी करना है, उसी को आपको पढ़ना है। ठीक है। सर क्योंकि ना हमें सेमेस्टर 2 की अभी किताब ना पूरी नहीं मिली है, खाली अकाउंट्स की मिली है और एक मिली है हमें बिजनेस लॉ की। तो सर बाकी और जो हमारे हैं सब्जेक्ट दो, वो हम कहाँ से पढ़े? वही मैं आपसे बता रहा हूँ कि देखिए, आपका स्टडी मटेरियल आपका राइट है, वो आपको बाई पोस्ट मिल जाएगा अगर आप सब लोग ODL सिस्टम में एनरोल्ड है। इग्नू में देयर आर 2 सिस्टम्स, वन इज ऑनलाइन एंड सेकंड इज ODL। ऑनलाइन मीन्स आपको स्टडी मटेरियल प्रिंट मटेरियल में नहीं मिलेगा, आपको जो प्रोवाइडेड लिंक होंगे उसी से आपको पढ़ना होगा। और ODL में यू विल बी get your study material in print form at your home. Sometimes what happen, IGNOU send study material at your doorstep, but वो कई बार रिटर्न हो जाता है आपके पोस्ट ऑफिस से, तो आपको पोस्ट ऑफिस में भी आपको थोड़ा सा टच रखना पड़ेगा कि हमारा स्टडी मटेरियल आ रहा है। सो नेवरदलेस इसमें आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि हमारे पास ओपन सोर्सेज भी हैं, जिसमें मैंने आपको कहा कि IGNOU का ज्ञान कोर्स है, वहाँ पर भी आप अपने कोर्स कंटेंट सर्च कर सकते हैं, उनको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बट वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल नहीं है, ठीक है, हाँ वो हम देखते हैं इसका और एलिमेंट ऑफ स्टैट्स का। हाँ, कोई बात नहीं, नहीं होगा तो हम यहाँ से आपको चर्चा तो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जरूर करेंगे, है ना, और डेट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अदरवाइज किताब चूँकि BBA न्यूली इंट्रोड्यूस्ड प्रोग्राम है IGNOU में, आपको सबको पता होगा, पहले BBA रिटेलिंग चलता था, तो BBA रिटेलिंग का मटेरियल तो मोस्ट ऑफ मटेरियल इज अवेलेबल ऑन ज्ञान कोर्स में भी अवेलेबल है। और आपके पास एक IGNOU का कंटेंट ऐप होगा। IGNOU के जो मोबाइल हैं, आपके जो मोबाइल हैं उसमें आप चाहे एंड्रॉयड हो चाहे आपका वो एप्पल है या कोई सी भी कंपनी का हो, उसमें आपका IGNOU का कंटेंट ऐप आप डाउनलोड करके स्टडी मटेरियल पढ़ सकते हैं। बट एज फार एज BBA कंसर्न, ये चूँकि न्यूली लॉन्च है तो इसमें कुछ मटेरियल अभी शायद ओपन सोर्स पे शायद ना डाला हो, पर आप चिंता मत कीजिए, आपको प्रिंट मटेरियल मिल जाएगा। और नहीं मिलेगा तो हम लोग यहाँ पर आने वाले दिनों में जितने भी हम लोग साथ में हैं, हम लोग एक एक करके सबके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। सो आज का टॉपिक, मैं भी आपके पास एक मटेरियल था, उसी को मैं भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, ताकि हम लोग दोनों मिलकर, सारे लोग मिलकर के डिस्कस करेंगे उसी को। लेट मी शेयर समथिंग ऑन स्क्रीन। स्क्रीन विजिबल है आपको? यस सर। Yes. यस सर, विजुअल है। यस सर। फुल स्क्रीन है? हाँ जी। ओके, सो दिस इज योर स्टडी मटेरियल। हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, और उम्मीद है कि आप सब लोग थोड़ा पढ़ के आए होंगे, नहीं पढ़ के आए होंगे तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं टू मेक दिस टॉपिक क्लियर। So today's topic is business organization and management. You know, there are 3 terms are important in this
title itself. One is business, then second is organization, and third is management. So first of all, let us know about business from you. Anybody tell what is business? अपने शब्दों में हाँ बोलिए. Yes, your own Business word. involves buying and selling of goods and services. Okay, good. Near to definition. Yes. Anybody else? और कोई बताएं? Activity of buying and selling of services and goods with the objective of earning profit. Okay. Yes. पार्थ, आप क्या समझते हैं बिजनेस? व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस? अथर्व, Sir, business is a practice in which we buy or selling goods and we make money. मीन्स आपने एक नई टर्म जोड़ी, And मनी, so we earn profit. प्रॉफिट. यस. Sir, any activity carried primarily with the objective of earning profit can be called as business. So. Good. Anybody else? Or Sir, yes, speak please. बोले, it is a kind business of and open activity. interaction. Don't hesitate. बोले, हाँ. Sir, an activity of production or exchange of satisfying goods or services carried with the primary intention of earning profits. Very good. और सर यही है बस. गौरव, आपने कुछ बताया? आप लोगों में से कुछ लोग इन सर्विस भी हैं क्या, रिटेल मैनेजमेंट में? और ऑल आर फ्रेशर्स? ना सर, हम सर्विस में हैं. हाँ जी सर, मैं भी सर्विस Freshers में है. हाँ. Sir, I am fresher. Okay. Sir, I am also a fresher. I am fresher too, so. So I have two questions. One from freshers and second from all those are already employed. First, freshers. Why you opted this program? Anybody? कोई भी पार्ट बताएं. आपने ये बीकॉम, ये बीबीए क्यों ऑप्ट किया? There should be something in mind, na? Why we are going to study this kind of program? Gaurav. So the reason I chose this course is because I have to do something in business. It equips you with a lot of knowledge, how to handle business, how to organize business, manage business, how to work with the team. Are you fresher or employed? Fresher, sir. Yeah, good. Okay, good, Samira. Thank you. Gaurav Mishra. Yes, sir. आप कुछ कह रहे थे. Are you employed or fresher? Employee, sir. Retail में. Retail में है. So why you joined this program? सब कर रहे थे इसलिए किया? हाँ नहीं, ये तो नहीं है. नहीं, सिर्फ what बिजनेस. बिजनेस अपना खड़ा करना है, क्योंकि see, after studying this program you will be able to even open your own business or kind of a startup, kind of MSME. There are a lot of scope after doing this program. Means you can work as an entrepreneur, you can work as a team leader, you can work as an employee. There are so many. So this program is a kind of bouquet of lots of or many opportunities.
है ना। तो इसलिए मैं जानना, दो मेरा सवाल था। One was from freshers, why you joined this program, and second from already employed. Because those are already employed, definitely this program will sketch a new dimension for them also. So let us discuss one by one our topic, and I'm very happy. It is a very good interaction to all. All are motivated, all are enthusiastic. Okay, so my question was what is business? So let us discuss your study material, and it is a kind of good study material. It will give you overall overview of your program. Although this is the foundation of Indian business. After discussing today's session, yes, so objective of this chapter or this session is, there are 4 units in this block, and first block objective is identify broad categories of human activities. Whatever we do in term of business, in term or in family or in society, all activities are called human activities. So we will be identifying the broad categories of these human activities. Second, what I have already asked, what is the business? We will be able to learn what is the business, and list the features and objective of business. What are the features and what are the objectives of business? We will be able to understand. And business activities and their interrelationship, we will be able to learn. And nature of business organization, I mean what kind of business organizations exist in India, because we will be able to discuss only Indian context in this unit. And new term, most of the already are employed must hear the term of MSME, but there are some freshers. We all will be able to learn what is MSME concept and what are the benefits of MSME. So इस यूनिट में हम लोग ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन और एक दूसरे से समझने का प्रयास करेंगे. So let us start. Human activities. As I told you, as a person, as a human, what I do in my day-to life, in society or in business or in organization or in family, all activities means just after awaking and to till night, whatever we do, all are known as human activities. जो भी हम लोग काम करते हैं सुबह उठ करके, हम लोग बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जो प्रॉफिटेबल हो सकती हैं या कुछ नॉन प्रॉफिटेबल हो सकती हैं. कुछ एक्टिविटीज सोसाइटी के लिए, कुछ एक्टिविटीज अपने एम्प्लॉयबिलिटी से रिलेटेड, कुछ अपने एजुकेशन से रिलेटेड होती हैं. सो ऑल एक्टिविटीज, ऐसे आपने इसमें देखिए बड़ा अच्छा लिखा है. वी गेट अप फ्रॉम बेड इन द मॉर्निंग, ब्रश आवर टीथ, टेक बाथ एंड गेट ब्रेकफास्ट, इवन टिल स्लीपिंग. हम लोग कॉलेज जाते हैं, हम लोग अपने क्या बोलते हैं सोसाइटी में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, शॉप में जाते हैं. ऑल एक्टिविटीज आर नॉन एज ह्यूमन एक्टिविटीज. इफ वी गो टू समराइज human activities, there are 2 types of human activities. Human activities basically, one is economic activity, जहां से हमको कुछ प्रॉफिट मिलता हो, कुछ फायदा हो, मनी मिलती हो, रिकॉग्निशन मिलती हो, ये है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज. एंड सम आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं है, कहीं मनी इन्वॉल्व नहीं है. जैसे आपने एग्जांपल अगर लेना हो तो मदर इज मेकिंग फूड इन हाउस, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऑल्दो इट कम्स अंडर द ह्यूमन एक्टिविटी. लेकिन वहाँ कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है. बट एट द सेम टाइम if the maid is cooking food, that is economic activity. So activity is same but motive is different. अगर कोई भी एक्टिविटी किसी इंडिविजुअल को मनी अर्न करा रही है, प्रॉफिट अर्न करा रही है, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. अदरवाइज नॉन प्रॉफिटेबल या नॉन मनी इन्वॉल्व एक्टिविटीज आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. और डिटेल में जाएंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैज
मीन्स वन इज बिजनेस, जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। वन सेकंड इज प्रोफेशन, इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज प्रोफेशन। एंड थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। ओवरव्यू देखें ऊपर से तो हमें तीनों एक जैसे लगते हैं कि तीनों में मनी इन्वॉल्व है, प्रॉफिट इसमें मिल रहा है हमको, लेकिन इनके स्ट्रक्चर, इनके ऑब्जेक्टिव्स तीनों के एकदम डिफरेंट हैं। बिजनेस हैव सम अदर ऑब्जेक्टिव्स, प्रोफेशन हैज सम अदर ऑब्जेक्टिव एंड डेफिनेशन एंड देयर आउटपुट। Employment is also have different kind of economic activity. So let us discuss first non-economic activity. These are the activities which are conducted by a human being due to love, affection, यानी कि जो हम लोग अपने परिवार में, अपने सोसाइटी में करते हैं, जो भी एक्टिविटीज, बिकॉज ऑफ affection, because of care, because of social obligation, religious obligations. Even हम लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं फॉर फिजिकल फिटनेस, दैट इज आल्सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। या पेट्रोटिज्म, बट देयर आर सो मैनी, बट नॉट फॉर अर्निंग मनी। उनसे हमें और अलग कुछ मिल सकता है, हमें अच्छी हेल्थ मिल सकती है, हमें अच्छी हैबिट्स मिल सकती हैं, बट देयर इज नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ अर्निंग मनी। सो जितने भी हम लोग हाउस में, सोसाइटी में अपने, इवन देयर आर सम एक्टिविटी, आप इसको आगे पढ़ोगे, इवन देयर आर सम एनजीओज, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ भी देयर आर मैनी एक्टिविटीज विच आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट वी विल डिस्कस इन कमिंग डेज। द हाउसवाइफ कुकिंग फॉर द फैमिली, जैसे मैंने आपको अभी डिस्कस किया। चिल्ड्रंस गोइंग टू स्कूल, देयर आर सम ऑब्जेक्टिव्स बट नॉट मनी। बच्चों को स्कूल जाना है, बट वो नॉट फॉर मनी, बट टू गेट सम काइंड ऑफ नॉलेज, एजुकेशन, सम ट्रेनिंग, प्लेइंग गेम्स। सो दीज कम्स अंडर द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर है? और कुछ डाउट किसी को? नो सर। या देयर आर मैनी अदर एक्टिविटीज। प्रेयर, हम लोग रोज सुबह शाम, चाहे हम किसी भी रिलीजियस को हम लोग फॉलो कर रहे हो, हम लोग प्रेयर करते हैं अर्ली मॉर्निंग, इवन इवनिंग। सो दीज आर दिस काइंड आल्सो। फेथ, हम लोग जो अपनी रिलीजियस एक्टिविटी करते हैं, ऑल आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देयर आर सम सोशल वर्कर्स, उनकी जो एक्टिविटीज होती है, मीन्स जो हमारे जो पुअर फैमिलीज हैं, उनको कुछ उनकी हेल्प करना, या उनके एरियाज में क्लीनिंग कराना, या और बहुत सारी सैनिटरी एक्टिविटीज हैं, वो सारी एक्टिविटीज भी नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटी हैं। सीधा सीधा है कि ह्यूमन बीइंग जो काम करता है, किसके लिए? फॉर सोसाइटी, फॉर फैमिली, और फॉर रिलीजियस एक्टिविटीज, बट नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसको हम और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी हो सकती हैं। वन इज चैरिटेबल एक्टिविटीज, हम लोग जैसे डोनेशन देते हैं किसी को, या कुछ डोनेट करते हैं, नॉट ओनली मनी। लेबर सर्चिंग फॉर ए सोशल बेनिफिट प्योरली बेस्ड ऑन सॉलिडरी एंड विदाउट मॉनेटरी एडवांटेज, है ना। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। फॉर इंस्टेंस गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, कम्युनिटी वर्क्स हैं, सोशल असिस्टेंस हैं। So these comes under the charitable activities and it is non-economic activity. Household activities, as we have already discussed, घर में जो हम काम करते हैं अर्ली मॉर्निंग टू स्लीपिंग टाइम, है ना, लाइक फीडिंग, वॉशिंग, चाइल्ड केयर, और बहुत सारी एक्टिविटी जो हम घर में करते हैं, हाउस होल्ड एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इंडिपेंडेंसी, नेविगेटिंग अंडर प्रिविलेज एंड अंडर मार्जिनलाइज जो सेक्टर्स हैं, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए जो हम डोर टू डोर जाते हैं, या उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, ऑल कम्स अंडर द इंडिपेंडेंसी एंड दिस इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वॉलेंटरी स्किलिंग, पीपल हु फैसिलिटेट मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स इन अचीविंग एम्प्लॉयमेंट बाय ट्रेनिंग। देयर, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे एनजीओज भी हैं जो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, जो सोसाइटी में जो मार्जिनलाइज ग्रुप है, या पुअर फैमिलीज हैं, या फिर उनके एजुकेशन के अपलिफ्टमेंट के लिए जो सोशल एक्टिविटी करते हैं वॉलंटरी लेवल पर, वो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। सो कम्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज।
ऐसी एक्टिविटीज जहां मनी इन्वॉल्व हो, प्रॉफिट हो, इवन सम टाइम लॉस भी हो सकता है, बट मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि उसमें मनी इन्वॉल्व होगी. इन टर्म ऑफ प्रॉफिट और लॉस, दैट्स इट्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ वर्क एंड नेचर ऑफ एनवायरनमेंट, कि हम किस तरह का बिजनेस, किस तरह की हम एक्टिविटी कर रहे हैं, कि समटाइम्स उसमें प्रॉफिट भी होता है और समटाइम्स वी गेट सम लॉस. बट इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर वेयर मनी इज इन्वॉल्व. सो इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिफाइन किया है इन्होंने. दीज आर एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकिंग बाय ह्यूमन बीइंग फॉर अर्निंग मनी और लाइवलीहुड. दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंसर्न विद प्रोडक्शन. जैसे आपने बिजनेस को हमने डिफाइन किया, उसमें से प्रोडक्शन आपने वर्ड यूज किया. एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, जहां आपने गुड्स की बात करी, एंड सर्विसेज. इसमें 3 चीज इंपॉर्टेंट है. एक है प्रोडक्शन, दूसरा है उसका गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन, एंड थर्ड इज सर्विस. फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर वर्क करता है हॉस्पिटल में, टीचर वर्क करते हैं स्कूल में, और एम्प्लॉय अपने ऑफिस में जाते हैं, फार्मर अपने खेत में काम करने के लिए जाते हैं. सो वो किसी ना किसी रूप में दे ऑल आर डूइंग दिस टू अर्न money or for livelihood or to acquire some wealth. So these activities are economic activities. इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने का प्रयास किया, ऑल्दो इनकी पढ़ने के बाद हम दोनों का डिफ्रेंशिएशन हमें समझ में आता है, लेकिन चलिए इसको थोड़ा सा ये फैक्ट कुछ आपके आइटम, या प्लीज. Can you please increase font size a little bit? हाँ या प्लीज, एक मिनट, लेट मी ट्राई. Visible? Yes, sir. Now it is okay. Yeah. So difference between economic and non-economic activities. In terms of meaning, as you are aware, the meaning of both activities are different. Economic activity where wealth, money is involved, such kind of activities are known as economic activity. Where money is not involved, activities are performed for social and mental or psychological necessities. This is non-economic activities. So definition definitely different है दोनों की, economic activities and non-economic. Purpose is also different. You all are aware. Economic activities purpose is financial motive is there, and non-economic activities social and mental needs. Means हम लोग जो घर पे काम करते हैं, सोसाइटी में काम करते हैं, these are non-economic activities. Outcomes. If we see the economic activity, what is the outcome? These activities results in the generation and dissemination of goods and service, whereas the non-economic activities are personal cantonment. Cantonment means personal, जो हमारा जो belief है, वो जितनी भी activity हैं, these are non-economic activities. Measurement, how we can measure? If the money is increasing or decreasing, the activity is economic. And personal fulfillment is measured, that is non-economic activities. As far as value is concerned, if income is there, financial income is there, national income is there, so this is the measurement of value of economic activity. As whereas non-economic activities, no income or no money or no wealth is required for non-economic activities. एग्जाम्पल्स हम लोग पहले भी देख चुके हैं, इसमें भी देख लेते हैं. एन एकेडमिशियन और स्किल पर्सन, एक डॉक्टर, एक लॉयर, ये जितने भी लोग हैं सब लोग काम करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए. घर में टीचर, देखिए मैंने एक एग्जाम्पल बताया कि खाना बनाना, कुकिंग इज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. If a house lady is cooking the food, that is non-economic activity, whereas a other person or other lady, maid or some helper is cooking the food, then it comes under the economic activity because she or he is getting some money. So teacher, if a teacher is teaching in a school, that is economic activity. If a teacher is teaching to her or his child, means her own son or her own daughter, so it is non-economic activity. A doctor treating poor patient without taking any fees and consultations, so it is also means doctor is working
काइंड ऑफ एनजीओ एक्टिविटी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करते हैं, कई बार आपने देखा होगा कैंपिंग, दे यूज टू हैव ए कैंप, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स. लेट अस, आगे हम चलते हैं. सो व्हाट आर द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी? बिकॉज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज वेरी limited, but as far as economic activities are concerned, it has various sectors. जैसे आपने अभी डिस्कस भी किया, उसकी डेफिनेशन से डिस्कस किया, तो बहुत सारे इसका ब्रॉड एरिया ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. द इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट इकोनॉमिक, you all are aware, financial achievements by producing goods and services. The economic activities of any country can be arranged into following divisions: primary sector, secondary sector, tertiary sector. Means economic activities have three sectors. One is primary sector, second is secondary sector, and third is tertiary sector. इसको हम थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं. Economic activities are commenced with a cost-effective intention. Non-economic activities alternately do not have ये फिजिकल कॉस्ट. चलिए हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करते हैं. नॉन इकोनॉमिक, ये देखिए, देर आर 3 सेक्टर्स इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी. इनको हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं. व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर, व्हाट इज सेकेंडरी सेक्टर, एंड व्हाट इज टर्सरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. लेट अस डिस्कस प्राइमरी इकोनॉमिक सेक्टर. Primary sector is a sector which is related to withdrawing materials required for production of good. एक ऐसा सेक्टर जहां हम लोग मटेरियल को विड्रॉ करते हैं कुछ भी गुड्स बनाने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर. जैसे एग्जांपल्स आप देखें, एग्रीकल्चर है, ब्रीडिंग है, फॉरेस्ट्री है, फिशरी है, हंटिंग है, माइनिंग है. यहाँ से हम लोग, जैसे हमने सपोज करिए हमने इसको माइन करके हमने कोयला निकाला, या हमने फिशरीज करके फिश निकाला, तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ लोग रॉ मटेरियल हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं. तो रॉ मटेरियल कलेक्ट करने की जो भी सेक्टर है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी इकोनॉमिक सेक्टर. सेकेंडरी में जो रॉ मटेरियल हमने कलेक्ट किया है, वट एवर इट इज, और फ्रॉम एनी इंडस्ट्रीज, इट मे बी फ्रॉम एग्रीकल्चर, ब्रीडिंग, फॉरेस्ट्री, फिशरी, हंटिंग और माइनिंग और मैनी अदर सेक्टर्स. यहाँ से जो रॉ मटेरियल को जो हम यूज करेंगे, जो प्राइमरी सेक्टर हमने यूज किया है कुछ बनाने के लिए, जैसे हमने मान लो कॉटन हमने इकट्ठा किया, कॉटन इज रॉ मटेरियल, बट उसको हम क्लॉथ में जो कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रॉम रॉ मटेरियल, या हम लोग और कुछ बना रहे हैं, अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ गुड्स बना रहे हैं, इट कम्स अंडर द सेकेंडरी इकोनॉमिक सेक्टर. अब प्राइमरी से हमने सेकेंडरी में हमने रॉ मटेरियल को लिया, रॉ मटेरियल जितने भी सेक्टर्स उसमें इन्वॉल्व हैं, दीज आर प्राइमरी इकोनॉमिक सेक्टर. उस रॉ मटेरियल को हमने जो कुछ भी बनाया, कोई भी प्रोडक्शन हमने किया, कोई भी प्रोडक्ट हमने बनाया, दैट इज सेकेंडरी इकोनॉमिक. लेकिन इसमें एक थर्ड है सर्विस सेक्टर. इन दोनों सेक्टर को जो भी सेक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है, दैट इज नोन एज टर्सरी इकोनॉमिक सेक्टर. आप देख लीजिए, मान लीजिए अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, इफ यू मेड समथिंग, रॉ मटेरियल को आपने बनाया, जब तक उसका प्रमोशन नहीं होगा, है ना, उसकी पब्लिशिंग नहीं होगी, और उसका एक तरह से प्रमोशन नहीं होगा, पब्लिशिंग नहीं, मार्केटिंग नहीं होगी, तब तक ये दोनों सेक्टर काम नहीं कर पाएंगे, और दोनों सेक्टर विल बी एक तरह से कोलैप्स कर जाएंगे विदाउट सर्विस सेक्टर. तो ये सर्विस सेक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इट कम्स अंडर द टर्सरी सेक्टर. इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने की जरूरत है. टर्सरी सेक्टर रेफर टू सर्विस प्रोवाइडिंग एक्टिविटीज विच कैन बी सीन इन डिस्टिंग्विश्ड डोमेन्स. इट्स एग्जांपल्स, जैसे आपका ट्रांसपोर्टेशन है, और डिसमिनेटिंग एजुकेशन है, मेडिकल सर्विसेज हैं, और अदर एग्जांपल जितने भी, जैसे अपने कुछ लोग बीबी रिटेलिंग में जो हम लोग जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो एमआर है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, दे आर सर्विस प्रोवाइडर. अगर किसी भी बड़ी केमिकल फैक्ट्री ने कोई बनाया है, कोई मेडिसिन बनाया है, अनटिल अनलेस वो पीपल तक नहीं जाएगा, मार्केटिंग नहीं होगा, है ना. एनीबॉडी अवेयर? मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्शन, प्रमोशन, मार्केटिंग एंड वन मोर, क्या है, व्हाट इट इज?
प्रोडक्शन, प्रमोशन सर और सर प्लेस प्लेस नहीं आएगा इसमें, प्रमोशन है और आपका पब्लिशिंग है, नहीं प्रोडक्शन, प्रमोशन, पब्लिशिंग एंड हाँ लास्ट होगा इसका मार्केटिंग है, लेकिन इसको बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स। सो आई मीन टू टेल यू कि जब तक दोनों सेक्टर, मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि जब तक दोनों सेक्टर तभी सफल होंगे जब आपका सर्विस सेक्टर उसमें काम करेगा। देखिए कोई भी मटेरियल है, कोई भी प्रोडक्शन है, उसको पहुंचाने का काम चाहे इन टर्म ऑफ, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हो, चाहे वो आपका पब्लिशिंग के थ्रू हो, चाहे वो आपका प्रमोशन हो, प्रमोशन भी वो भी हो सकता है ऑडियो विजुअल, और ये आपका प्रिंट मीडिया में भी हो सकता है। तो ये ऑल आर काइंड सर्विस सेक्टर और इट कम्स दैट अंडर द टर्सरी इकोनॉमिक सेक्टर। या अभी कुछ देर पहले हमने बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम लोगों ने जाना। इनको डिटेल में जानते हैं कि व्हाट इज बिजनेस, व्हाट इज प्रोफेशन एंड व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट। ऑल्दो ऑल थ्री कम्स अंडर द इकोनॉमिक सेक्टर, चूंकि इन तीनों में कहीं ना कहीं मनी इन्वॉल्व है। दीज और एक्टिविटीज आर meant for to earn money or to earn wealth. So let us discuss what is business. Yeah. Any activity carried primarily with the object of earning profit can be called a business activity. कोई भी एक्टिविटी अगर हम कर रहे हैं, उनको डिटेल में हम पढ़ेंगे। वो एक्टिविटी मीन्स वो सर्विस प्राइमरी सेक्टर की भी हो सकती है एक्टिविटी, सेकेंडरी की भी हो सकती है और टर्सरी की भी हो सकती है। बट अगर हम उस किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं और प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बिजनेस एक्टिविटी। दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज अचीव्ड बाय प्रोडक्शन। आप ये कहाँ से मिलेगा प्रॉफिट? ये मिलेगा अचीव्ड बाय प्रोडक्शन और एक्सचेंज ऑफ वांट सेटिस्फाइंग गुड्स और सर्विसेज। तीनों सेक्टर्स, यानी कि तीनों सेक्टर्स उसमें इन्वॉल्व हैं, और प्रॉफिट किसी भी एक में से अगर हमको है तो दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड बिजनेस एक्टिविटी। देयरफॉर वी कैन डिफाइन बिजनेस as an activity concerned with the production and or exchange of want satisfying good and services carried with a view of earning profit. So ये एक एग्जैक्ट और अपने आप में कंप्लीट डेफिनेशन है कि कोई भी एक्टिविटी, चाहे उसमें हम प्रोडक्शन कर रहे हों या गुड्स का हम एक्सचेंज कर रहे हों या उसमें हम सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व हों, अगर ये तीनों एक्टिविटीज किसी न किसी रूप में अर्निंग प्रॉफिट में लेके जाती हैं, सो दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड बिजनेस। एग्जाम्पल्स: प्रोडक्शन ऑफ सॉप, सेल ऑफ एग, प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स, ट्रांसपोर्ट, देयर आर मैनी। इसमें से कुछ एक्टिविटी आपने देखा होगा, कुछ एक्टिविटी सर्विस से जुड़ी हुई हैं, यानी टर्सरी से, कुछ सेकेंडरी से और कुछ प्राइमरी से। ए पर्सन हु इज एंगेज इन बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेसमैन। ये आपको पता ही होगा, जो भी बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा, ही और सी विल कॉल्ड एज ए बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर इसलिए चूंकि एंटरप्रेन्योर को हम अलग से पढ़ेंगे। एंटरप्रेन्योर इज ए बिग अम्ब्रेला ऑफ काइंड ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। एवरी बिजनेसमैन कैन नॉट बी एंटरप्रेन्योर, बट यहाँ पे हम लोग इसको और में पढ़ लेते हैं कि बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर सेम है। Similarly, a firm formed for the purpose of carrying business activity is called business enterprise और business firm। तो एक चीज जान लीजिए, कोई भी एक्टिविटी, जहां अगर हम एक्टिविटी की बात करेंगे तो वो एक्टिविटी बिजनेस है, उस एक्टिविटी को करने वाला बिजनेसमैन है, और जहां वो एक्टिविटी हो रही है उसको हम कहते हैं एंटरप्राइज और बिजनेस फर्म। तो ये बहुत सिंपल सी छोटी छोटी सी चीजें जो आप लोग को जानना चाहिए और हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं। प्रोफेशन डिमांड सम काइंड ऑफ, एक तरह से हम कहें कि एक यूनिक और पर्टिकुलर नॉलेज उसके लिए होनी चाहिए प्रोफेशन के लिए। एन एक्टिविटी विच इन्वॉल्व द रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज सर्विस। यहाँ बिजनेस में देखिए एज सच कोई बहुत ज़्यादा एजुकेशन की या बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं होती है, बट
एज फार एज प्रोफेशन इज कंसर्न, ऑफ कोर्स प्रोफेशन में एक पर्टिकुलर नॉलेज की, पर्टिकुलर स्किल की जरूरत होती है. सो दैट्स व्हाई दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड प्रोफेशन. An activity which involved rendering the personalized service of a specialized nature based on professional knowledge, education and training is called profession. सर्विस रेंडर्ड बाय डॉक्टर, आपने देखा होगा जितने भी अभी कुछ प्रोफेशंस हैं जो हर कोई नहीं कर सकता, मीन्स डॉक्टर को करने के लिए एमबीबीएस और एमडी जरूरी है, लॉयर्स के लिए एलएलबी या एलएलएम जरूरी है, ऐसे चार्टेड अकाउंट के लिए सीए और सीएस जरूरी है. तो दीज आर द क्वालिफिकेशंस they should or they must have to be called a professional. So these services are comes under the profession. Generally for each category, आपने देखा होगा प्रोफेशन जो भी ईच कैटेगरी की है उसके लिए आपने देखा होगा कि उनके लिए प्रोफेशनल बॉडी भी है, प्रोफेशनल एक तरह से स्टेचुटरी बॉडी है, जैसे आपने बार काउंसिल ऑफ इंडिया पढ़ा होगा, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है. तो ये प्रोफेशनल बॉडीज हैं जो उस डिग्री को रिकॉग्नाइज करती हैं और उसको एक तरह से एफिलिएशन देती हैं कि नाउ द पर्सन आफ्टर कंप्लीटिंग दिस डिग्री विल बी एबल टू वर्क एज ए प्रोफेशनल वर्कर और एज ए प्रोफेशन. सो प्रोफेशनल शुड बिकम द मेंबर. इसमें एक चीज और है, लॉयर को उस बॉडी का मेंबर होना जरूरी है, उसकी परमिशन लेना जरूरी. सब डॉक्टर को भी एमसीआई से परमिशन लेनी होती है. जितने प्रोफेशन हैं इनको डिग्री के साथ साथ जो स्टेचुटरी बॉडी हैं उनसे काइंड ऑफ लाइसेंस भी लेने की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज दे कैन नॉट वर्क एज ए प्रोफेशनल्स. एम्प्लॉयमेंट इज काइंड एम्प्लॉयमेंट इज आल्सो एक्टिविटी विच वर्क फॉर ए मनी और काइंड ऑफ वेल्थ, बट इसमें एजुकेशन के साथ साथ आपने देखा होगा कि द पर्सन मस्ट गो डिफरेंट काइंड ऑफ स्क्रूटनी एक्टिविटीज, काइंड ऑफ इनका एग्जामिनेशन होता है एंट्रेंस, उसके बाद में उनका इंटरव्यू हो सकता है और समटाइम्स लेयर्स, मल्टी लेयर्स एंट्रेंस होते हैं, प्राइमरी, देन फिर मेंस, देन फिर ये पर्सनैलिटी टेस्ट एंड मेडिकल टेस्ट. सो देयर मे बी, बट ऊपर की जो दो एक्टिविटीज हैं, पहली एक्टिविटी है बिजनेस, वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व है. सेकंड में एक स्पेशलाइज और एक पर्टिकुलर स्किल की जरूरत है. एम्प्लॉयमेंट में स्किल की तो जरूरत है, पर्सनलाइज मार्कशीट, पर्सनलाइज डिग्री की जरूरत है, बट देयर इज नो लाइसेंस इज रिक्वायर्ड. सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल आपने एक टीचर बनना है तो आपके पास बीएड तो होनी जरूरी है, बट उस बीएड के लिए लाइसेंस आपको कुछ नहीं लेना है कि आपको टीचर बनने का कोई लाइसेंस आपको लेना पड़े टीचर बनने के लिए. नो, इफ यू एक्वायर्ड डिग्री देन यू कैन बिकम एज ए टीचर, बट उसके लिए डेफिनेटली काइंड ऑफ प्रोसेस है. उसके बाद आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा एंड देन उस अपॉइंटमेंट लेटर को मिलने के बाद, ज्वाइन करने के बाद किसी भी फर्म में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में यू विल बी कॉल्ड एज एम्प्लॉयड एंड दैट एक्टिविटी कम्स अंडर एम्प्लॉयमेंट. So any activity assigned to a person by employer under an agreement or rules, जो आपको मिला है अपॉइंटमेंट लेटर, उसमें उनके सारे रूल्स, सारे पर्क, बेनिफिट्स, सब कुछ उसमें इंक्लूडेड होते हैं, सब कुछ क्लियर होते हैं. रूल्स ऑफ सर्विस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ए पर्सन हु अंडरटेक सच एक्टिविटी इज कॉल्ड एम्प्लॉय. फॉर परफॉर्मिंग सच एक्टिविटी एम्प्लॉय रिसीव रेम्युनरेशन, उनको रेम्युनरेशन मिलता है फ्रॉम द एम्प्लॉयर, जिसको हम कई बार वेज बोलते हैं, सैलरी बोलते हैं, अलाउंस बोलते हैं, और उसमें बहुत सारे और भी बोनस होते हैं, है ना. टाइम टू टाइम टीएडीए, टाइम टू टाइम आपने देखा होगा कि डीएनएस अलाउंस भी वो मिलता है. तो ये सब आपके आते हैं एम्प्लॉयमेंट में. एक पर्सन को अगर किसी फर्म में एम्प्लॉयड करना होता है तो उसको ये सब एक काइंड ऑफ रिटन एक डॉक्यूमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड ये अपॉइंटमेंट लेटर. उसमें सारी की सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ये बहुत क्लियर होती हैं कि आपको मंथली इतना वेज मिलेगा, आपको ये पर्क मिलेंगे. द एम्प्लॉयमेंट इज आल्सो कॉल्ड सर्विस. वर्किंग इन ए फैक्ट्री, ऑफिस, वो एम्प्लॉयमेंट हर जगह है, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, फैक्ट्री हो, ऑफिस हो, होटल हो, कॉलेज हो. बट इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे एक काइंड ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट मिलता है टू वर्क एज ए एम्प्लॉय. एम्प्लॉयमेंट इज अलायंस बिटवीन टू पार्टी, ये दो लोगों के बीच में है, एक तो एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉय, यानी एक
जो कंपनी का जो बॉस होगा और एक जो होगा जो आपका एक वर्कर के रूप में, 2 लोगों के बीच में काइंड ऑफ अलायंस है एम्प्लॉयमेंट। आगे देखते हैं आगे क्या है। सो टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर हम एम्प्लॉयमेंट को और डिटेल में पढ़ें तो एम्प्लॉयमेंट हैज आल्सो वेरियस काइंड। वन इज फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, जिसमें आपको मीन्स एक रिटायरमेंट एज होती है, उस रिटायरमेंट एज तक आपको उस पर्टिकुलर फैक्ट्री में, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में आपको काम करना है, दैट इज कॉल्ड फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट मीन्स ऑन सम टर्म एंड कंडीशंस, आपको 2 इयर्स के लिए, 3 इयर्स के लिए, 4 इयर्स के लिए रखना है, या फिर आपको मंथ के लिए रखना है, दैट इज पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट। थर्ड इज कैजुअल एम्प्लॉयमेंट। कैजुअल एम्प्लॉयमेंट लॉन्ग टर्म चल सकता है, बट उसको कभी भी he or she can fire any time, so that is called casual employment. Contract also time based, fixed term. आप देखा होगा, if you read employment news, तो where you must see that the services for time based means आपने देखा होगा कई बार रजिस्ट्रार है या और बहुत सारी वाइस चांसलर, these are called एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट और पर्टिकुलर टाइम के लिए हैं, तो यहाँ पर इट इज नॉन एज कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद उसको उस फर्म पर कोई राइट नहीं होगा काम करने का या उससे कोई बेनिफिट्स मांगने का। नेक्स्ट इज अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप होती है जिसमें जो एम्प्लॉयर है, जो एम्प्लॉय है, वो नॉलेज भी गेन करता है और साथ में उनको कुछ वेजेस और कुछ उनको सैलरी भी मिलती है। अप्रेंटिसशिप इज ए प्रैक्टिस ऑफ ट्रेनिंग फॉर इंडिविजुअल इन ए पर्टिकुलर ट्रेड और प्रोफेशन। मैंने कहा है कि वो उसको कुछ काइंड ऑफ ट्रेनिंग भी मिलती है और उसके बाद में उसको साथ साथ उसको थोड़ा सा वेज भी मिलता है। ए पर्सन अंडरगोइंग अप्रेंटिसशिप इज कॉल्ड अप्रेंटिस। अप्रेंटिस हैव ए बेनिफिट ऑफ फुल इंश्योरेंस प्रोटेक्शन, यानी कि वेज के साथ साथ उनको और भी कुछ वो हैं बेनिफिट्स हैं, लाइक सिकनेस है, एक्सीडेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पेंशन इंश्योरेंस को कुछ मिलता है जब तक वो उस ऑर्गेनाइजेशन में एज ए अप्रेंटिसशिप काम करता है। सीजनल एम्प्लॉयमेंट वो होता है कि जहाँ पर कोई प्रोफेशनल चीज हमें चाहिए होती है, लेकिन उसको हम पर्टिकुलर टाइम के लिए रखते हैं। जैसे आपने देखा होगा हिली एरियाज में कुछ होटल्स होते हैं, तो वहाँ पूरे साल से साल डे टू नाइट बिजनेस नहीं होता है, वहाँ पे फॉर 2 मंथ और 3 मंथ उन पर्टिकुलर टाइम के लिए एम्प्लॉयर कॉल्ड पर्सन टू बी एम्प्लॉयड, बट फॉर ए पर्टिकुलर टाइम मीन्स फॉर पर्टिकुलर सीजन आर कॉल्ड सीजनल एम्प्लॉयमेंट। हमने हाँ कुछ क्वेश्चन है, एक मिनट एक सेकंड। या पूछिए। Sir, what could be the examples of apprenticeship form of employment? Apprenticeship का examples even BBA retailing, if you are doing kind of BBA or BB retailing, then you will be allotted some firm and some industry to work for a particular time, in which you will get some kind of training how to deal with your client, how to deal with your environment, and how to deal with your services what you are going to provide to the service sector or in firm. Is it similar to internship or anything like that? Definitely internship, apprenticeship having some kind of specialized knowledge, some kind of specialized training. So we can say it is a similar, but apprenticeship have some kind of professional knowledge, some kind of unique or some kind of individualized knowledge. Internship is also same, but internship, if you see, in internship we called some medical practitioners, we called some business persons. So, but as far as apprenticeship is concerned, it demand some professional or some personalized training is required. Anushka Tomar. सर कैजुअल एम्प्लॉयमेंट एक बार एक्सप्लेन कर दो। देखिए कैजुअल जो होता है ना, कैजुअल को कभी भी उसको निकाला जा सकता है, बट क्योंकि कैजुअल वो एक तरह से ना ही तो उसको कोई अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है,
जिसमें टर्म एंड कंडीशन हो कि आपको इतने समय के इतना आपको आपकी रिटायरमेंट एज ये होगी और आपको ये पर्क्स मिलेंगे। कैजुअल को सिंपली वो मिलता है ये रेम्यूनरेशन या कहिए आपको डेली वेज मिलता है उनको। उनका वेज बढ़ता नहीं है, उनका वेज वही रहेगा और उनको पर्टिकुलर जब हमें ज़रूरत होती है, जैसे हम लोग देखा है कि हम उनको रखा हमने कुछ दिन के लिए, फिर हमें ज़रूरत नहीं है तो हमने उनको हटा दिया कि अब हमें ज़रूरत नहीं है। तो दे आर दिस एक्टिविटी कॉल्ड कैजुअल एम्प्लॉयमेंट। लाइक दुकानों में बंदे को Okay, sir. रखती है ना सर काम करने के लिए, जैसे आसिफ दोबारा बोलें, रिपीट अगेन। लाइक कुछ दुकान में हम पार्ट टाइम के लिए बंदे को रखती है ना, लाइक काम करने के लिए, उसको तो कभी भी निकल सकता हूँ और उसका सैलरी फिक्स्ड भी होगी। हाँ, बिल्कुल, यस। ओके सर। So shall I continue? Sir, so what is the difference between casual and seasonal? सीजनल एरिया स्पेसिफिक होता है। मैंने आपको ना, जैसे मान लो हिल एरिया में आपको पता है कि ठंड के इलाके में ही जाना है ना। या जैसे अमरनाथ के आसपास आप देखेंगे देर आर सो मैनी शॉप्स, तो वो उसी समय खुलेंगी जब वहाँ पर दर्शनार्थी जाते हैं या वहाँ पर लोग जाते हैं। अदरवाइज वो रेस्ट 8 ईयर या 9 ईयर वो बंद रहते हैं। वो तो उसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, चूंकि जब बंद रहेंगे वहाँ पे कोई जाएंगे ही नहीं, तो वहाँ पे वो कोई प्रॉफिट अर्न होगा नहीं। तो सीजनल वही है, पर्टिकुलर सीजन के लिए वो फर्म या वो इंडस्ट्री या वो होटल चेन वो काम करती है, उतने ही समय के लिए हम उनको बुलाते हैं। दैट इज कॉल्ड सीजनल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है सर, ठीक है। और कोई? So, is there any kind of particular exam that apprenticeship we have to give an answer? नहीं, इट्स डिपेंड्स ऑन प्रोग्राम व्हाट वी आर डूइंग। देखिए, आफ्टर डूइंग सम काइंड ऑफ डिग्री, सपोज कीजिए हमने प्रिंटिंग में डिग्री लिया है ना, प्रिंटिंग में डिग्री लेने के बाद हम तब तक उसमें नहीं काम कर पाएंगे जब तक हमको उसको प्रैक्टिकल नॉलेज ना हो। उसके लिए हमको किसी प्रिंटिंग प्रेस में या किसी प्रिंटिंग इंडस्ट्री में हमको अप्रेंटिसशिप के लिए जाना पड़ता है फॉर 6 मंथ और फॉर 1 ईयर। 1 ईयर से ज़्यादा तो शायद नहीं होता है अप्रेंटिसशिप, उतना ही होता है। तो उस पर्टिकुलर पीरियड में वो आपको उसको सिखाएंगे भी, जो आपने नॉलेज गेन की है इन द फॉर्म ऑफ थ्योरेटिकल, उसको प्रैक्टिकली उसको आपको सिखाएंगे भी। और सिखाने के साथ में आपको सम वेज और सम जो आपके जो सर्विस बेनिफिट्स हैं काइंड, जैसे इंश्योरेंस है या आपको सिक अलाउंस है या आपको मेडिकल रियम्बर्समेंट है, ये सब आपको मिलेंगे। Sir, it is basically like a training in that particular field. यस, ट्रेनिंग के साथ साथ आपको काइंड ऑफ वेज भी है, मीन्स एक तरह से सेट वो है आपका A limited amount of salary. यस। इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ सैलरी, इट काइंड ऑफ आपको एक असिस्टेंस है। हाँ, Oh yes. कॉन्ट्रैक्ट और बॉन्ड भी कैन से सर, एक कॉन्ट्रैक्ट है बॉन्ड रहता है सर। कौस्तुभ क्या बोल रहे हैं आप? मैं बोला इट्स अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और बॉन्ड कि आप नए ज्वाइन हुए हो तो दिस पर्टिकुलर फेज के लिए आपको इतना ही वेज या सैलरी यस, मिलेगी। हाँ, बट देखिए अप्रेंटिस चूंकि यहाँ पर ट्रेनिंग इन्वॉल्व है, वहाँ पर ट्रेनिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वेज इतना हाँ, इम्पोर्टेंट yes, नहीं है। नहीं क्योंकि है देयर आर सो मैनी अप्रेंटिसशिप जहाँ पे मिलता है और कहीं पे कुछ मिलता भी नहीं है, बहुत कम मिलता है। यस इट्स यस टोटली डिपेंड ऑन फर्म, क्योंकि ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है अप्रेंटिसशिप में। ओके, सो आगे थोड़ा और पढ़ते हैं। So we were discussing business, profession, and employment. Although all are having same category, means economic activities all are and meant for earning profit, money. But there is some basic difference between business, profession, and employment. Although हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि बिजनेस कौन कर सकता है, प्रोफेशन कौन करेगा, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होंगी, एम्प्लॉयमेंट किस तरह का एक तरह से
प्रोसीजर है कि एम्प्लॉयमेंट को कैसे समझेंगे। ये एक चार्ट से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ले लीजिए चार्ट, इसको मैं थोड़ा और बड़ा करता हूँ अगर विजिबल ना हो तो। यस, नाउ इट इज a full page. So there are 3: business, profession and employment. First we take mode of establishment. Entrepreneur decision और अदर लीगल फॉर्मेलिटीज बिजनेस के लिए चाहिए होती हैं कि हमें एक एंटरप्रेन्योर, हमारे दिमाग में कुछ एक आइडिया होना चाहिए जिसमें हम कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकें। प्रोफेशन में मेंबरशिप इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि लॉयर को बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मेंबरशिप लेनी होगी, उसका कुछ काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन होगा। एम्प्लॉयमेंट में एक डॉक्यूमेंट होता है दैट इज कॉल्ड अपॉइंटमेंट लेटर और सर्विस एग्रीमेंट। नेचर ऑफ वर्क, if we talk about business, तो provision of goods and services to the public. Profession, rendering the personalized service, जो भी आपकी एक्सपर्टीज हैं उनको आप प्रोवाइड कराते हैं प्रोफेशन में। एम्प्लॉयमेंट में जो कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसका जो भी वर्क है उसको आपको काम करना है, बट दैट अंडर सम रूल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट। क्वालिफिकेशन फॉर बिजनेस, नो क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, ओनली एंटरप्रेन्योरशिप इज रिक्वायर्ड। अगर कोई भी किसी के मन में कुछ है, कोई नया आइडिया और उसको वो स्टार्ट के, अभी इफ यू सी इवन इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देयर आर सो मैनी इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू स्टार्टअप और काइंड ऑफ इनोवेशन इज देयर, इंक्यूबेटर्स आर देयर। बहुत कुछ काम हो चुका है, इसको आगे हम पढ़ेंगे। So for business, no minimum qualification is required. Although businessman can be a PhD holder or postgraduate, but as far as qualification is concerned, even a literate person or illiterate person can build the business empire. Profession, expertise and training, क्योंकि वो प्रोफेशन है उसमें पर्टिकुलर स्पेशलाइज ट्रेनिंग होनी चाहिए उसकी, और स्पेशलाइज फील्ड में ही वो काम करेगा। डॉक्टर को लॉयर नहीं बनना है या लॉयर को डॉक्टर नहीं बनना है, वो लोग अपनी पर्सनलाइज सर्विस ही देंगे। यस, इफ यू टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट, क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, क्योंकि ये एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड है वो किस टाइप के पर्सन को रिक्रूट कर रहा है एज ए एम्प्लॉय, उसके लिए ट्रेनिंग और क्वालिफिकेशन की वो अपना सेट करते हैं। आपने देखा होगा कि देर आर सो मैनी सेक्टर्स, उसमें सिर्फ बैचलर्स अलाउड हैं। देर आर सो मैनी सेक्टर बैचलर के साथ पर्सनलाइज ट्रेनिंग भी उनको चाहिए, या अप्रेंटिसशिप कह रहे हैं, या इन सब के लिए क्या जरूरत है इंटर्नशिप की, क्योंकि दीज आर द नीड ऑफ द डे। आज हम जिस भी फैक्ट्री में, गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में हम जाते हैं तो हम क्वालिफिकेशन के साथ साथ दे वांट सम एक्स्ट्रा स्किल इन टर्म ऑफ अप्रेंटिसशिप, इन टर्म ऑफ सर्टिफिकेशन, इन टर्म ऑफ काइंड ऑफ ट्रेनिंग। रिवार्ड ऑफ, आपने देखा होगा कि बिजनेस में प्रॉफिट अर्न होता है, प्रोफेशनल फीस होती है, प्रोफेशनल लॉयर की फीस होती है, डॉक्टर की फीस होती है, और यहाँ एम्प्लॉयमेंट में आपको सैलरी मिलती है या वेज मिलता है, इसके अलावा नहीं कुछ। कैपिटल इन्वेस्टमेंट में आपने देखा बिजनेस में तो आपको बहुत कुछ लगाना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड एज पर साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। एज फार एज प्रोफेशन इज कंसर्न, लिमिटेड कैपिटल चाहिए आपको, क्योंकि आपको अगर लॉयर भी बनना है तो आपको एक काइंड ऑफ आपको अपना ऑफिस, अपना एक चैम्बर आपको बनाना पड़ता है। और एज फार एज दिस एम्प्लॉयमेंट, कोई कैपिटल नहीं चाहिए। आपने जो अपनी क्वालिफिकेशन अर्न की है उस क्वालिफिकेशन के बेस में आपने एग्जाम दिया, इंटरव्यू दिया और यू सेलेक्टेड एंड गॉट एम्प्लॉयड, उसके बाद आपको सैलरी या वेजेस मिलते रहेंगे। तो इसके लिए कोई कैपिटल जरूरत नहीं है जिसको आपको लगाना पड़े टू गेट एम्प्लॉयमेंट। रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रॉफिट्स आर अनसर्टेन एंड इरेगुलर रिस्क इज प्रेजेंट। बिजनेस में आप देखेंगे कि प्रॉफिट हो भी सकता है, नहीं हो सकता, मीन्स रिस्क ऑलवेज वर्क करता है। एज फार एज प्रोफेशन इज कंसर्न, आपने देखा कि उसकी फीस जो है वो रेगुलर है, ना तो वो घटती है, बहुत ही केसेस में उसको बढ़ाते हैं, बट वो भी। और इसमें रिस्क, थोड़ा बहुत रिस्क है कि अगर डॉक्टरी नहीं चली, लॉयरशिप नहीं चली, आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े अच्छे क्वालिफाइड लॉयर्स हैं, लेकिन अगर उनको पर्टिकुलर नहीं मिला, उनको फील्ड नहीं मिला या उनको एक्सपोजर नहीं मिला तो वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर वो अपना कोई प्लेस बदल लें या अपना एरिया बदल लें तो वहाँ पे वो पॉपुलर हो जाते हैं वो, तो इसमें भी थोड़ा सा रिस्क है।
या फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोफेशन शुरू किया, उसमें पहला ही, अगर लॉयर की हम बात करें तो पहला ही केस वो हार गए, दूसरा भी हार गए, तो यहाँ पर रिस्क है उनको। दे हैव टू परफॉर्म वेल टू गेट काइंड ऑफ रिकॉग्निशन एंड काइंड ऑफ पॉपुलरिटी। एम्प्लॉयमेंट में आप देखते हैं कि चूंकि आपको फिक्स एंड रेगुलर पे मिलती है, कोई रिस्क उसमें है ही नहीं, अनटिल अनलेस आपको अगर फायर ना कर दे कोई, अदरवाइज तो नो रिस्क। और इफ इट इज ए परमानेंट एम्प्लॉयमेंट, तो एज सच नो रिस्क इज देयर। हाँ, इवन एम्प्लॉयमेंट में बहुत रिस्क तब हो सकता है जब आप अंडर द रूल्स एंड जो आपके जो सीसीएस कंडक्ट रूल होते हैं उसके तहत अगर आप काम नहीं करते हैं, देन यू माइट हैव सम रिस्क, बट एज फार इन नॉर्मल कंडीशंस देयर इज नो रिस्क इन एम्प्लॉयमेंट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफर पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटीज, यानी कि बिजनेस का हम क्या करते हैं, कई बार हमने कोई बिजनेस किया तो उसका हम सर्विस सेक्टर और साइड में खोल सकते हैं, तो अपने बिजनेस को हम लोग कई बार ट्रांसफर कर लेते हैं, प्रोडक्शन टू सर्विस और सर्विस टू प्रोडक्शन। प्रोफेशन में पॉसिबल नहीं है, अगर डॉक्टरी हमने की है तो हमको वही चुनना पड़ेगा, उसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसको वही करना पड़ेगा। डॉक्टर को डॉक्टरी करनी पड़ेगी और लॉयर को अपना वकील ही वकालत ही करनी पड़ेगी। एम्प्लॉयमेंट में भी पॉसिबल नहीं है ट्रांसफ़र, अगर आपने एक अनटिल अनलेस आप दोबारा किसी दूसरे जॉब के लिए, पोस्ट के लिए सेम प्रोसेस आपको अडॉप्ट करना होगा, तभी वो ट्रांसफ़र पॉसिबल है। इन नॉर्मल केसेस नॉट पॉसिबल। कोड ऑफ कंडक्ट, नो कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रेस्क्राइब, बिजनेस में कोड ऑफ कंडक्ट प्रेस्क्राइब नहीं है, प्रोफेशन में फॉलो करना पड़ता है, और इसमें एज फार एज एम्प्लॉय में तो कंप्लीटली कोड ऑफ कंडक्ट है एज पर द एम्प्लॉयर और एज पर द फर्म। तो ये तीनों में ये डिफरेंस है, बिजनेस में, प्रोफेशन में और एम्प्लॉयमेंट में। सो बिजनेस को अगर हम और डिटेल में पढ़ें तो देर आर सम एसेंशियल फीचर्स ऑफ बिजनेस। 1 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं, 1 मिनट पानी पिला दो जी। गोपीनाथ, क्या सवाल है आपका? Sir, actually, I'm not so comfortable in Hindi, so could you please try to speak in English? I am trying my level best to speak in much English, but there are some Hindi. So anyway, no problem. I got your concern. Thank you. सर आपका माइक ऑफ हो गया गलती से। Yeah, Gitnesh, there was break for 1 minute. Yeah, there is a question on screen. What is code of conduct?
although Rashid Iqbal elaborately very good. See, code of conduct is applicable basically in employment. Code of conduct is a kind of set of rules, and it starts from beginning of day. Means you have to work 9:30 to 6 p.m. Then second, what are the activities you expected from you? Means how to behave with your seniors, how to behave with your colleagues, how to behave with your staffs, how to behave with your woman colleague, how to behave with your male colleague. See, so you have to adhere all kind of norms. Then second is how to spend your time in office, how to work in office. So there, this is just kind of set of norms. This called conduct of rules. So in even the conduct of rules may vary from organization to organization, but there are some general conduct of rule. If you see, and there is a kind of booklet, although it is not as per your topic, there is a Swami handbook or Swami handbook describe the code of conduct rules which are acceptable, which are applicable in every government organizations. So if time permit, you may have a look on code of conduct. As far as uh, Rashid Iqbal, he also brought some kind of definition. A code of conduct is a document that outline an organization standard, principles, expectations, and morals. As I already discussed, what is expected from employee, how to work, how to attend office, and what is the timing. Business owners and HR representative often implement a code of conduct to establish a set of rules for their employee to ensure the behavior align with the company's values. So this kind of set of rules is called as code of conduct. Yeah, so what is next? So we were discussing the essential features of business. So one is dealing a good and services. You might be aware there is a area where we deal goods and business. This is a kind of one feature. Business deals with goods and services. The goods may be consumer goods, such as there are examples sweets, breads, clothes, shoes, and there may be the producer goods, such as machinery, equipment. Means one comes to kind of production, and second is service. So one feature of business is dealing in goods and service. And service means kind of transportation, kind of promotion, kind of publication, kind of publicity. The second is production and exchange. Yeah. Production is the economic activity of business where there is a production or transfer or exchange of sales of goods and service for value. If goods are produced for self-consumption or presentation as a gift, such activity not to be treated as a business. You know, if we call business activity, then there should be some kind of profit and money generation. In a business activity, there must be a two parties, one a buyer and second a seller. Such activity should concern with the transfer of goods or exchange of goods between the buyer and the seller. So this is the second feature, means production and exchange is the second feature of business. Third feature है continuity and regularity in dealing. A single transaction shall not be treated as a business, means it should be continue, means selling and buying practice should be continue, otherwise it cannot be treated as business. If we see one transaction done in a year, it cannot be treated as a business. An activity is treated as business only when it undertake continually
or at least recurrently. For example, if a person sell his residential house, it is not considered as a business. He purchased one house for him or for him, livelihood, but because of any reason he sell his house. So this is not business. Although he got some profit, but he did in a one or two instance. So it cannot be treated as a business. Yes, if a builder used to build many houses and many flats, and he sell all the flats, and thereafter he start building of another colony or another flats. So it is this is the continuous activity of him or her. So this can be treated as a business. So continuity is required to be called as business. At the same time, vegetable vendor purchase vegetable from the market in the morning and sell out his customer by evening. So this is business, yes, because he used to do this activity day to day on a regular basis. Then second feature is profit motive. Means whatever we are doing, if profit is coming, then it is a business. Profit, earning profit is a primary motive of business. This is not to undermine the importance of the element of service in the business activity. In fact, a business will flourish only and only when it is able to serve its customer to their satisfaction. Means satisfaction is required for a business, and if satisfaction is there for the customer or for the buyer, then definitely profit will work, and this activity will be kind of profit motive. So profits are essential to enable the business or to survive or to grow or to expand or to get recognition. Profit is required. Element of risk, yes, if a business is there, then there may be possibility we got profit, or sometime we may not get profit. Means the profit or the business may be at the risk. In every business there is a possibility of incurring loss. This possibility of incurring loss is termed as risk. The element of risk exists due to a variety of factors which are outside the control of the business enterprises, but there are maybe some reason for risk, why the risk is coming in the business. So risk whose probability can be calculated and can be insured. Losses due to fire, floods, theft. So there are so many reasons there for the risk. If our business is chemical related, means industry with some chemical factors are there, some chemical equipments are there. So where there can be possibility like fire, or if a business with the sea area, there may be some reasons for flood. So there are some risk, and these risks can be avoided by the by understanding the environment, by understanding the areas where we are going to establish our business. So this risk can be minimized or can be removed. There are important objectives of business. Although without objectives, business cannot be run. But to understand the business, there are some objectives. What are these objectives? Yes. So first objectives is economic objectives. The primary objective of business are economic, and there are some economic objectives are there listed as follows: earning of satisfactory profit, exploring new markets and creation of more customers, growth and expansion of business operations of the firm, making innovation and improvement in goods and services so that customer get improved and more economic good and services. So these are four are the economic activities
economic objectives which has to be achieved in a business. Some social obligations are also there, and for that some social objectives are also set. Business, being a part of society, has obligations toward the society also. So some major social objectives are providing more and more employment opportunities to the people in the country. Means at least where business is established, so business must provide the employment even nearby or peoples. The second is supply of quality goods to the community. This is also most important. If the business firm or organization is providing bad quality of product, so it may affect the business environment and may create a kind of risk. Providing goods at reasonable price, it is also important duty of firm. They should provide product or goods at reasonable price. Ensure fair returns to the investors who invested the money in the business. So it is the duty of firm or set top management to ensure fair returns to the investor in term of debentures and shareholders. Production of goods in accordance with national interest and priorities. Yes, national interest is important. Any firm cannot run business without taking care the national interest and priorities. Means it also comes under the kind of rules and regulations. Means every firm has to obey the national interest. The second is human objectives. There are important objectives. One deal with economic, and second is social, and third relate to human objectives. Business activities is generally carried out through the human objectives of business, may thus take account of economic well-being and the employees, social and psychological satisfaction of employee, as well as development of human resources. In nutshell, business should create an environment where individual can flourish when satisfaction of employee should be there and psychological satisfaction also there. I mean there kind of good environment, healthy environment where employee can work for the growth of the firm or organization. So it is the duty of firm or top management. So this is the human objective. What is next? Yeah. So if we talk business, how to set up a business, and what are the factors and what are the important component of business. If you are planning a start a business, you should evaluate the demerits of each different business structure and work out which structure suits the requirement. A business structure is a group of organization that is lawfully recognized in given jurisdiction and characterized by the legal definitions of the particular type. On the basis of ownership and management, business may be classified into the following category. यानी कि business can be classified in following category. One is sole proprietorship, means only one person is dealing the business is called sole proprietorship. Then second is partnership, where more than one and two or three pupils are working for a business. On some share basis, means one person having 30% share, then second is 20%, and third is having 50%. So the profit will be divided uh, on their investment based on their investment. So this business called partnership. Third is company. Company, a kind of public sector basically. Company, there may be number of shareholders, or there may be some multi-layer management also. So this is called company.
cooperatives, basically cooperatives work in society firms. Means if you see in villages there are very cooperative societies where women do some small business like swimming of clothes or kind of making of toys, or so this is called cooperatives. So this is overview of business. If you have time, then try to answer these questions: what is business, what is profession, what is employment. If you see IGNOU material have some space for learning, you can answer your queries in these blank areas. No need to purchase any booklet. You have to write your answer in the specified areas. These are some examples. Selling vegetable. What is selling vegetable? It is profession or employment or business. 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 It is a kind of a small business. So this is the activity. A person working in a medical shop as a salesman. Salesman. What is salesman? Employment. Employment. Salesman is employment. Although for a salesman, Employment. yes. So this is a kind of exercise you can learn yourself by giving the answers. Yes, next is industry. As you are aware, industry refer to the part of business activities which is concerned with the production of some goods or services through utilization of available material, means raw materials or resources. Industry utilize the natural resources and transfer them for final consumption or for further use. It means the industrial activity aims to ensuring the supply of goods in that from which suits the objectives, needs, and convenience of the person expected to use them. Industry create form utility of goods, for example, farms, factories, mines. So these are the industries: mines industry, and some cloth industry, some chemical industry. There are some examples available of wide range of good. They are used to create, used to build, used to product kind of goods and production. These goods cater to the needs and convenience of the people who are actually buyer. In nutshell, the activities of human being engage in extractions, production, processing, constructions, and fabrications of products comes under the industry. Yeah, there are some classification of industry. One is on the basis of nature of activity, means which kind of activity are going on in the industry. The first is extractive industries, genetic industries, manufacturing industries, and construction industries. So these are basically activity based work. On the basis of nature goods, consumer goods industries, producer goods, and these are the types basically. There are how many types of industries. On the basis of labor of investment, some heavy industries are there, some light industries are there. Based on size, some small scale industries, some large scale industries. Based on area, some regional industries are there, some national and some multinational industries are there. So if we go one by one, extraction industries, then genetic industries, activities engage. Okay. Yeah, activity engage in that discovery and extractions of natural, like mines industries are there, where we used to find or we used to extract some important material like minerals, animals, plants, tree, etc. from the surface and breadth of the surface of the earth. There are many industries are working on this. Some are
upper earth, and some are even within the ground level. So extractive industries are called exhaustive industries because with every attempt there is a depletion of resources, and this wealth exhaust mining, farming, quarrying, hunting, fishing all comes under the extractive activities. Genetic activities are other kind of activities which are concerned with reproducing and multiplying plants, animal with the objectives of earning profit. From their sale comes under this category. Examples Like are tissue culture. yeah, tissue culture, poultry farms, cattle. There are many genetic industries are there. Manufacturing industries where some manufacture exist there, means some kind of raw material is there, and from that raw material we are creating some product and some goods. That is called manufacturing industries, like sugar industries, cotton, textile industries, iron and steel industries, fertilizer industry, where job material is being used to create or to manufacture some kind of products. Construction industry, these industries means where buildings are being constructed, schools are being constructed, bridge, dam, roads, canals, railways, lines, all comes under the construction industry. If you see, have a look, means industries. This is a chart. Extractive industries, mining, farming, fishing, quarrying, genetic nurseries, fish culture, cattle breeding, poultry farms, manufacturing, iron and steel, fertilizer, vanaspati, electronics, and construction means where buildings, roads, canals, and dams are being constructed. So this is a small flow chart of industries. And this is the kind of chart what you have learned. This is human non-economic activities, and what should be the other side? Economic activities. And what is that number 2? Non-economic. Business. 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 And third, Employment. 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 This is the kind of exercise what you have learned. So next is commerce. What is commerce? Can anybody tell what is commerce? Yes, sir. You can read from a screen. What is commerce? All the activities that establish link between producers of goods and consumers of these goods. Yes. Basically, it also deals with the process of business, because produce of goods, consumer is there, goods are there. So these all comes under the commerce. All the activities which establish link between the producer of goods, consumer of goods, and maintain a smooth and uninterrupted flow of goods between them comes under the commerce. Means what factories are producing, what consumers are using, and at what extent, and the flow of this regularly or in a smooth manner or in uninterrupted flow of goods and services. This activity, this whole gamut activity comes under the commerce. So basically, commerce is a kind of kind of tool, kind of tool to learn or to calculate the level of production or level of consumer, and how money and the way of money flow,
and what the profit and what the loss. To calculate all this comes under the commerce. Basically, commerce is a tool, or commerce is a kind of knowledge. What is next? Yeah. If we see, commerce is a mainly concerned with the purchase and sale of goods, and also embraces of all those functions which are essential for maintaining a smooth and uninterrupted flow of goods and services between buyer and sellers. Thus, there are two main aspects of commerce. One is purchase and sale of goods. The second is activities essential for the smooth and uninterrupted flow of goods. Therefore, we can classify the whole range of commerce activity into two categories. The one is trade. Trade is a activity, it comes under the commerce. Then what is trade? Activities of purchase and sale called trade. The second is aids to trade. Activities which facilitate the smooth and uninterrupted flow of goods are called aids to the trade. If we see a chart, is import chart is given. Okay, before going to the chart, we must read what is trade. You have already learned that the human activities engaged in buying and selling of goods and service comes under the trade. Therefore, trade include sale, transfer or exchange of goods and services with the intention of earning profit. The objective of trade is to make goods available to those persons who need or who require them or who are willing to pay for them. Thus, trades play a major role in establishing contact between the producer and the consumer and eliminate the hindrance of the person. So, trade is an activity where buying and selling uh, exist. A person who is engaged in trade is called a trader or trade middleman. Various traders operate between producer and consumer and remove the hindrance of the person. We can classify, देखिए यहाँ पे दो भागों में बांटा है इसको. One is internal trade and second is wholesale trade. Internal trade. What is internal trade? Basically, internal trade take place within the boundaries of country. If we are doing activity within the country and the buying and selling activities are within the country, then it is called internal trade. The payment for the same is generally made in the national currency. Obvious, it is obvious. This internal trade is also termed as inland trade or national trade or home trade or domestic trade. So it is also classified into two categories, wholesale and retail trade. Wholesale means from where we can purchase a huge production or huge number of goods, and retail means at a small level user can purchase the goods and production as per their need uh, at a small level called as retail. In wholesale, even money, even profit is also less because the selling activity is going on at very large level, means price may be less as far as retail trade is concerned. Wholesale में price कम होगा. Buying and selling in relatively larger quantity is called wholesale rate. A person who is involved in wholesale is called wholesaler. Trade, retail trade, this refers to buying and selling in relatively smaller quantities. A person engaged in retail trade is called a retailer. So this is the basic difference between the one was the internal and the second is external, where the activity trading activities at foreign trade or internationally trade is called external trade.
obvious है कि the money is also may not in national currency, it may be international or foreign currency, maybe in dollar or in other currency. It is also having three categories: important trade, export trade, and re-export trade. Import trade means when a country buy goods from another country is called import trade. For example, India bought machinery from USA, it is called it. This is an import trade for India. But if we see conversely, for USA, it is export trade, because when a country sell goods from in first category, one is buying, means India is buying. For India, it is import, and other part USA is selling machinery goods. It is called export trade. And third is re-export trade. When the goods are imported from one country and we are also exporting this by having some profit, we are exporting to next or another country, it is re-export trade. Yeah, there was. So next is aids to trade. There are five aspects of this aids to trade. One is transportation, second is warehousing, third is insurance, advertising, and banking. All these factors are called aids to trade. Means the services and the activities which are helpful for trading are known as aids to trade. Transportation is one of them. Means one place to another place. If we are using the one product from one place to another place, transportation is important. Warehousing for uh, to have safe custody of the product in a particular place is warehousing. Insurance is also important because there may be some theft, there may be some natural hazards, means floods and outside. So insurance is also required. Advertising, as we discussed, if a production is done and there is no advertising, there is no awareness among the people, then production may not be helpful for the consumers. And fifth is banking. Banking is also important. If we are selling the product, then definitely money is coming, or to have money in safe custody, banking is required. Or in other words also, banking is required, because we cannot have money in currency form in the firm. This currency should be kept in banking for their onward transactions, mean kind of salary and wage of the employee, or some purchase of some machineries, or some expansion of business. So banking is required. So these are the aids of trades. This is the transportation. Transportation may be by road and rail, by aeroplane, water transportation is there, warehousing for safe, safe custody of goods for the particular time. Or sometimes what happen, if we produce the large number of goods, to warehousing is important to have
safe custody of the production. Insurance, as we have discussed, advertising also, banking. This is the chart, means what is the commerce in a very small. Commerce is a combination of trades and aids to trades activities. Trades is also defined international and external. Internal trade is also defined wholesale trade and retail trade. External trade is also defined import, export, and re-export. And aids of trades, as we have discussed, transportation, warehousing, banking, insurance, and what is it is next? Banner. Advertising, I guess it is. Yeah, advertising. Banner means kind of advertising. So this is the progress. You can. What is the difference between commerce and industry? What is the difference between internal and external trade? So this is the kind of exercise you should have a glance. Okay. So dear learners, this is the first day, है ना? So we will discuss more and more in tomorrow. Okay. In between, you have any question? May I ask, please. Sir, can you please tell about the offline classes if we will get it? Offline classes will be held at your concerned study center because online classes are only 40%. 60% you will get in face-to-face mode. Sir, so when the classes will get resumed? That your regional center will tell you. You may ask your question from your regional center by sending an email to your concerned RC. You are ODL learner or online learner? Sir, ODL. So definitely you will get some percentage of face-to-face counseling from your regional center. Sorry, from your study center. Okay. You may have watch on your RC website where you are enrolled. There are some kind of schedules are also there. You can have a look, and even you can send email to your RC from which date we are going to have face-to-face counseling sessions. But these are online counselings are very limited, only 40%. Okay. So thank you. We will see you tomorrow at same time. Thank you, sir. Yeah, okay. Thank you, sir. Okay, thank you, sir. 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 Okay, sir. Thank you. No.